As I said, there are some important portions are there. Those role is very much important. And then one portion was I said that Bahadur Shah Jafar, or we can say that Bahadur Shah second. Another one, it is I said that Bakht Khan. And then Bahadur Shah second, if I am talking about, and then Bakht Khan. You know that after the Meerut, when he is able to reach to the Delhi, and on the 12th May 1857 he reached Delhi, and then able to defeat the Britishers and able to, I said that, confiscate the Meerut sepoy. And if I am talking about Bakht Khan, that is I said that 30th May, he was a Subedar of artillery. He was a Subedar of artillery at Bareilly. And thereafter he did, I said that, I said, revolted at Bareilly. Revolted at Bareilly and then reached Delhi. And thereafter at the Delhi, who is here, and when he reached Delhi, so there is, I said that Bakht Khan, and one side it is, that Bahadur Shah second. अब इन दोनों के बीच का केवल प्रॉब्लम था. But even then the situation was going on, and then Bakht Khan, I said that June month, moved towards, I said, Lucknow, and here he has been, what I said that, killed. But Bahadur Shah, that it is, that जीने की चाह तो बहुत थी, लेकिन his wife, one of the wife name was Jinat Mahal, and his son, they have conspired and intrigued all information to, I said, British East India Company. सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, जिसकी वजह से I said जीने की चाह खत्म हो गई इनकी. And there is, from the Punjab side, there are the two regions who has supported. Which are the two regions supported in the British, to the British? Punjab and Sindhia. Which are the two who has supported? Punjab and Sindhia. And from the Punjab side, if I say, who can? Punjab side say, there is an, I said that Mr. Canning itself. Another one I said that Mr. Nicholson. पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, yes or not? Who started moving towards Punjab to Delhi? Nicholson and Canning, yes or not? और फिर उसके बाद सारे उनके सन को निकाल दिया. किसने निकाला? बहादुर शाह के जफर के सन को निकोलसन ने निकाल दिया. निकोलसन ने, और he captured Delhi. In September 1857 में ही दिल्ली को क्या कर लिया? Capture. Understood it? In the month of September. This is I said. And उसके बाद इस निकोलसन ने, I said that इसी में he has been died, and another person also get associated. It is I said that Hudson. एक आपको याद होगा, that is I said that मंगल पांडे, हडसन एंड स्मिथ. और इस हडसन ने, I said that hanged grandson and the sons of
बहादुर शाह सेकंड, दोनों को, सभी को मतलब जो है दिल्ली गेट पे हैंड कर दिया. सो हु हैज डन दैट? आई से हडसन. एक तो निकाल दिया सन को, और एक ने क्या कर दिया? हुड में डाल दिया. किस में डाल दिया? हुड में डाल दिया सन को. क्लियर है? सो विच आर द टू पीपल आर एसोसिएटेड विद द दिल्ली? Nicholson, and then which one I said that? Nicholson. Can you remember? So the next point, shall I remove? This is about, I said that Bakht Khan and Bahadur Shah second. The next one it is, I said that Nana Shaheb, Tatya Tope and Ajimullah Khan. Shall I remove? नाना साहेब, तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला खान. नाना साहेब, I said that Tatya Tope and Azimullah Khan. He was the PM of Nana Shahab. आपको पता हो, I said that 1817 और 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ. यस है ना? 1813, 1817, 18 में थर्ड एंग्लो मराठा वार. और इसमें बाजीराव टू, जो कि रघुनाथ राव का बेटा था, यस है, और दोनों ही बेकार थे इंसान. दोनों ही थे क्या? उनकी जो डायनेस्टी चल रही थी वही खराब चल रही थी. आई सेड दैट बाजीराव टू. अब बाजीराव टू को जब ये हारे, so from the, I said that when they have been, they used to be in the पेशवा. कहाँ पे रहते थे? पुणे में. दिस इज द पेशवा रीजन. उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया गया कानपुर में. कानपुर के एक रीजन है, इसका नाम है बिट्ठूर, वेयर दे हैव बीन डिपोर्टेड. और वहाँ पर बिट्ठूर भेज दिया गया था. याद रहेगा आपको? यस है ना? किसके पिट्ठू पे बैठ के गए थे? तात्या टोपे के नाम. और ये जो नाना शाह है, बाजीराव टू के क्या है? नाना शाह है is adopted son, and you know that what is the meaning of this. बिट्ठूर में बाजीराव टू को सेंड कर दिया गया इन कानपुर, and there was an some pension. लेकिन जैसे ही बाजीराव टू हैज बीन डाइड, इनके एडॉप्टेड सन नाना साहेब हैज बीन, आई सेड दैट उनकी पेंशन क्या हो गया? स्टॉप. पेंशन वाज स्टॉप. अब यहाँ पर पेंशन स्टॉप हो गया, तो ये दो बंदे जो हैं, कौन से दो बंदे? विच आई सेड दैट तात्या टोपे एंड अजमुल्ला खान. दिस टू पर्सन को ही हैज सेंड इट टू व्हाट आई सेड दैट Britain to go and ask about the pension, but it has been not successful. So Tatya Tope and Ajmullah Khan, Tatya Tope and Ajmullah Khan returned back. और इनको जब रिटर्न बैक, कहाँ से हुए थे? स्टेट में रिटर्न बैक फ्रॉम इंग्लैंड. वहाँ से रिटर्न हुए, एंड देन नो पेंशन. अब इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की फॉर द, आई सेड दैट, फॉर रिवोल्ट. सो कानपुर, आई सेड दैट one side, I said that Kanpur revolt started. Which revolt? Revolt at Kanpur. Who has started? Yes, tell me. Yes, sir. But the leader was who? Nana Shah. Yes, sir. उनका ही नाम लिया जाएगा हमेशा. Shall I remove?
this section. So Nana Sahib, Tatya Tope and Mullah Khan तीन. And then 1817-18 Anglo-Maratha war के बाद I said that he was not entitled because of the doctrine of lapse. Yes or no? So he cannot get pension. So इसी बेसिस पर तो इसका मतलब है कि दिस इज एन इंडियन रिवोल्ट, it is a revolt of India, yeah, it is a revolt as far as the personal aggression. Yes or no? So there is an involvement of what I said, that personal aggression. क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुआ है? Yes, tell me. Personal aggression. तो यहाँ पे कानपुर में जो रिवॉल्ट हुआ था, it is of what I said that. ध्यान रखेंगे, it is of what? Personal aggression. Who has done? Who has done? And लखनऊ में आपको पता है ना कौन है? बेगम हजरत महल. Who is, I said, लखनऊ? बेगम हजरत महल. लखनऊ में बेगम हजरत महल कानपुर रिवोल्ट. It is, I said, due to which I said अपना पर्सनल एग्रेशन था. एंड विच आर द थ्री पोर्शन एसोसिएटेड, आपको ही पता होगा, हमेशा से आपने नाम पढ़ते हैं होंगे. नाना साहब, यस सर, तात्या टोपे, एंड व्हाट आई सेड दैट अजीमुल्ला, अहमदुल्ला ने अजीमुल्ला, ध्यान रखिएगा. यस सर. तो यहाँ पर जब हुआ तो पहले ध्यान से रखेंगे व्हीलर. क्या नाम लिया मैंने? विच वन आई सेड दैट? व्हीलर. Neil Havelock. Three persons are there. Three, I said the generals. Which one I said that? Wheeler, Neil Havelock. This Wheeler was, I said that Tatya Tope was very much strong in, I said that गुरिल्ला वॉर, छुप कर लड़ाई में तात्या टोपे वाज वेरी फेमस. और समहाउ आई सेड, नाना साहब ने बोला था कि मैं व्हीलर को छोड़ दूंगा. एंड यू नो आई सेड दैट तात्या टोपे से छुपा कर इसको सीक्रेट पैसेज दिया था थ्रू द, आई सेड दैट गंगा रिवर, कि तुम कहाँ चले जाओ? इलाहाबाद. ही हैज गिवन द सीक्रेट पैसेज, बट बीच में ही आई सेड दैट इन गंगा रिवर he has been killed by the other Indian troops. I said that killed. किस कौन किल हुआ? ये tell me. तो इनको चक्का पे बिठा के व्हीलर पे बोल रहे थे तुम चले जाओ. He was sitting on the wheel so that he can go. Who? नाना साहब. बट इनका व्हील फंस गया. He has been entangled. किसमें? गंगा रिवर. So wheeler has been, I said that, killed in the troops among. ध्यान रखिएगा, who has been killed? Wheeler. yes or no? और जब कोई किल्ड हो जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? नीला. कैसा कलर हो जाएगा? नील. Another I said that two, I said that नील and I said that नीले हो गए और कहाँ पे चले गए? He has gone into the heaven and heaven में जाके locked. अरे कोई नीला होगा तो and he'll go to the heaven and locked. Kneel and Havelock. Which one I said that? And they have been also killed in this war. With the, I said that which are the three portion killed? Which are the three portion killed? Wheeler. Wheeler तो आपको याद रहेगा. And thereafter नीले हो गए and then heaven में locked. Kneel, Havelock. Is it clear to you? And then अब उसके बाद हमने बोला था, तो this is going on. This is the month of June. It is going on. But apart after that, coming of, I said that, याद होगा आप लोगों को कानपुर. And कानपुर में क्या है? Bell. Who is sounding? Camp का bell. The camp bell is sounding. Which one is sounding? Which one is sounding? So camp bell
ने किसको डिफीट किया? आई सेड दैट नाना साहब, तात्या टोपे, एंड along with I said that who? अजमुल्ला खान गायब हो गए यहाँ से. There was no. Perhaps he was in love with, and I said that British woman. But nobody knows what happened to the Ajmulla Khan. So they have been, I said that, ध्यान से सुनेंगे, they have been, I said that, fled away. अब ये कहाँ हुए थोड़ी देर के बाद बताऊंगा. Fled away. So Campbell camp, या सुना, कान में बेल बजाया, सारे भाग गए. एंड एक्चुअली में वो कहाँ से भागे थे? बिकॉज आफ्टर विनिंग द कानपुर and revolting the Britishers from the, I said, removing from the Kanpur, they have moved towards what? So Begum Hazrat Mahal was supported by whom? Nana Sahib and who? Tatya Tope. So actually they have been defeated where? Final defeat they have got where? Lucknow. Yes or not? So when some army were fighting at Kanpur, but Nana Sahib and Tatya Tope, अभी मैंने बताया था कि who has come to Lucknow? Bakht Khan. भाई बेगम है, आएंगे ही आएंगे. And who has come to the also at Lucknow? Nana Sahib and Tatya Tope. And perhaps you are not knowing, एक और 2 person और लोग आए हैं क्योंकि बेगम हजरत महल है. And the name of the person I said that वीर कुंवर सिंह. Who? याद रहेगा? That is from the Bihar. And another I said that Maulvi Ahmadullah. He came from, I said that, कौन सा जगह है? Which is the famous region in the present time in UP? फैजाबाद. तो he has come from फैजाबाद. He has come from, लेकिन फैजाबाद से पहले he has come from Madras. Britishers has fled him away from the Madras. Go away. Because he was creating revolt in Madras and then army man. He was preaching like this. तो ध्यान से, तो दिमाग में रखिएगा. Begum Hazrat Mahal was supported by whom? Nana Sahib, Tatya Tope. ये दिमाग में रहेगा. And the several portion along with which one came? Tell me. Bir Kunwar Singh and Maulvi Ahmadullah. याद रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे. नेपाल, झांसी and Bijnor. Nepal, Jhansi and Bijnor. So they have been defeated. They have been defeated. And then Begum Hazrat Mahal and Nana Sahib fled to Nepal. कहाँ चले गए? तात्या टोपे reached to झांसी. कहाँ चले गए? They have been fled to Jhansi. And Veer Kunwar Singh has gone to the, already you know that again he is back to Bihar. And which region? Ara. Yes or not? He has come from the Ara. And Mr. Maulvi Ahmadullah यूपी में कहाँ चले गए? बिजनौर. वे अपने फ्रेंड के पास. हिज नेम वाज पुलवानी. ही वाज अ रूलर. पुलवानी. याद रखेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेंड? पुलवानी. सो विच आर द पर्सन्स आर एट लखनऊ? फाइनली यस टेल मी. दिस इज द लास्ट बैटल एज फार एज इट इज कंसर्न. आई सेड वेयर इट हैज बीन हैपेंड? लखनऊ में कौन कौन थे? बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह. एंड फ्रॉम द actually coming from Madras, then coming to Faizabad, and then come to what? Lucknow. Maulvi Ahmadullah. Is it clear to you? And Begum Hazrat Mahal and Nana Sahib has fled to, and then Veer Kunwar Singh has gone towards his Bihar. And then Bijnor में कौन चला गया? Just tell me. Maulvi Ahmadullah. Can you remember? And then the Tatya Tope, who is very famous in the guerrilla war. Guerrilla war means I said that छुप कर लड़ना.